मम्मा क्या बना रही है? तेरा सर बना रही हो इस वक्त। बेलना चाहिए। आपका कुछ शेफ तो नहीं बेलना ये इससे तो तुम्हें करना। पहले ही बताना चाहिए था ना। Oops. हेलो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम बैक। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। उस दिन सारी बातें नहीं खत्म हुई थी, सो अब आज के व्लॉग में आपको मेरा रीसेंट डायग्नोसिस और जो सारी रीसेंट अपडेट्स हैं वो पता चलेंगी। एंड या breast cancer is one of the most survivable cancers, one of the most treatable cancers. So just knowing your body can save you from a lot. And then 2023 मेरे एनुअल चेकअप्स होते हैं मई जून जुलाई के इर्द गिर्द. आई गेट mammograms and MRIs done every year since I was first diagnosed. इस साल जब मेरा MRI हुआ उसके बाद ये था कि मेरी जुलाई के एंड में अपॉइंटमेंट थी जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि योर मैमोग्राम एंड MRI everything's clear, all good. On my birthday on the 14th of July, उससे 2 दिन पहले they called me and they said that can you come in? And I was like, oh, why? अब मुझे यही था कि अगर एकदम बुलाया then something is wrong. And the first thing that came to my mind was कि शायद there is something wrong with my other side or I have relapsed या कुछ ऐसा हुआ है. I told my friends and they're like, you know what, अपनी birthday पे ना जाओ. And I was like, नहीं जाना जरूरी है. And they're like, no, it's fine, just get it rescheduled. मैंने कहा चलो कोई नहीं. मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं 14th को नहीं आ, कुछ दिनों बाद आऊंगी. तब तक सिर्फ मेरा MRI हुआ था, नॉट माई मेमोग्राम. So I was like, okay. बर्थडे के कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल की एंड आई वेंट देयर एंड मैंने वो सुना दैट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. दे टोल्ड मी कि मेरे MRI में they could see a shadow in my lungs, which was very weird. I wasn't expecting the word lungs at all. I was like, yeah. I was like, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि what do you mean lungs? They're like, don't panic. हमने 2 हफ्ते के अंदर अंदर we're gonna do all your tests. We're gonna do a CT scan. We're gonna do a radioactive bone scan, ultrasound and test. Maybe it's nothing, or it can be cancer, or if you've recently traveled to Pakistan, I was in Pakistan recently, उससे कुछ महीने पहले, it can be TB, or maybe you had COVID कभी और उसका कोई permanent effect तुम्हारे lungs पे है. But MRI जो है वो lungs के लिए test नहीं होता. So whenever they see something in an MRI in your lungs, they have to do more tests and investigate and see what's going on. So they're like, don't think about it for 2 weeks. It's gonna be fine. It might be nothing. And after 2 weeks, they called me in again. And I went in there. 2 हफ्ते मैंने बहुत मुश्किल से, I didn't tell my parents. मैं उनको क्या बताती, मतलब कुछ था कुछ नहीं था, मैं क्या फ़ोन पे, मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान, मेरा भाई पाकिस्तान. I was here working. It just recently happened and I was like, मैं अभी क्या पैनिक डालूं. तो जब मैं 2 हफ्ते बाद गई, they told me that whatever they saw in my lungs is malignant, which means it is cancer. And it's everywhere in my lungs. And the next step would be doing a biopsy, going in through my throat, taking a sample of it. Uska pattern dekh ke they know that it's tumor, and with their expertise they knew ke it must be breast cancer that has spread udhar tak. If it was lung cancer, it would have been another story, bilkul something else. But they said that उनको यही लग रहा है कि it's breast cancer के mets that has gone there and they have spread everywhere, and it's, you know, maybe there was a microcell that was there for the past 3 years that wasn't detectable, and all of a sudden it has decided to flare up and they can see it. I don't have any symptoms at all. मुझे किसी भी तरह के symptoms नहीं थे, and they said that, you know, there are treatments
the things they told me initial step would be starting chemo really soon. They told me I'm gonna lose my hair. The first time I didn't have chemo, so losing my hair, that was a big deal. I lost a lot, but you know, hair, the hair is a girl's best friend. So अच्छा ठीक है, अगर अब कीमो होनी है, बायोप्सी होनी है, बायोप्सी के बाद they're gonna take a week or two to see what it is, confirm, give me a treatment plan. मैं ऐसा करती हूँ कि मैं घर वालों को जाके face to face बता देती हूँ पाकिस्तान. जबकि गर्मी थी एंड विद माय हार्मोन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, माय फैमिली नोज कि मैं इतनी गर्मी में पाकिस्तान नहीं आऊँगी क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती. सो व्हेन आई कॉल्ड माय डैड टू टेल हिम कि यू नो व्हाट, टिकट कराते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तान आऊँ. ही इज़ लाइक बेटा बहुत गर्मी है ये वो, बट देन आई हैड टू लाइक टेल हिम अ बिट. मुझे अपने भाई को बताना पड़ा, मैंने अपनी मामा को भी बताया कि कुछ हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट शुरू हुआ फिर बहुत मुश्किल होगा ट्रैवल करना. तो क्योंकि पिछली दफ़ा आई वॉज अवे फ्रॉम माई एक्सटेंडेड फैमिली, माई फ्रेंड्स इन पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग, दिस टाइम मैं वो करना नहीं चाहती थी. तो एक थर्सडे को मेरी हुई थी बायोप्सी. उन्होंने कहा था फॉर 24 आवर्स आई कैंट फ्लाई बिकॉज लंग्स का इन्वेसिव प्रोसीजर है. एंड आई वॉज एट द हॉस्पिटल फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड शाम को माई फ्रेंड्स पिक मी अप एंड वी केम होम. थर्सडे को वो हुई थी एंड सैटरडे को आई वेंट टू पाकिस्तान. When I was in Pakistan, I had the initial reports about the lungs and jo bhi hai. I didn't have the reports from the biopsy, but uske patterns and whatever the doctors had told me, मैंने अपनी family को बताया. मेरे cousins doctors हैं, they know. मैंने सोचा मैं second opinion भी ले लूँगी. शौकत खानम, आगा खान, just to, you know, be sure and know more. सबके साथ टाइम गुजारा, हंसी खेली, मज़ा आया. बस यही था कि थिंग्स आर गोना चेंज. जब मैं वापस जाऊंगी मेरी कीमो होगी, मेरे बाल उतर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा. लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है. उनकी बातें, उनकी दुआएं हैज़ ऑलवेज केप्ट मी गोइंग. मैं अपनी फैमिली की लाडली हूँ, मैं अपनी फैमिली की रौनक हूँ. द वे दे ट्रीट मी, जितना प्यार और दुआएं वो मुझसे करते हैं, जितनी दुआएं वो मुझे देते हैं, आई थिंक वो ही सारी चीज़ है जिस वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड आई एम एबल टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद एवरीवन. पाकिस्तान से फिर मैं नॉर्वे गई. नॉर्वे में मेरे डॉक्टर्स हैं. मैंने सोचा मैं उधर से भी ओपिनियन ले लूँ विद द रिपोर्ट्स आई हैव. दिस वाज द हार्डेस्ट गुड बाय एवर. मतलब मैं पाकिस्तान से बहुत दफ़ा इधर आई हूँ, गई हूँ, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान से आना, नॉर्वे से आना, इट वाज सो हैवी ऑन द हार्ट के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता. सो मंडे को मामा मेरी मेरे साथ नॉर्वे से आई. शी इज़ हेयर विद मी. My mom is my strength. She's always been very strong. I've seen her going through open heart surgeries, problems, and she's the actual Wonder Woman. And if you think I am strong, that's where I get it from. She's with me right now. She went to the appointment with me, and it didn't start with any good news at all. Bad news, but bad news. They told me that I have secondary breast cancer in my lungs, and this kind of cancer is not curable. This is always going to stay in my body. They have ways to stabilize it, control it, maybe shrink it, but इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. I have to be on treatment for the rest of my life, and it's going to be really tough. ये सुन के obviously I don't know, डॉक्टर ने मुझे तो देख के बोला था कि the attitude you have, you're gonna fight this. The most important thing is that you believe in your head that this treatment is gonna work. If I'm gonna get chemo, it's gonna work for me. For now, there is cancer in both of my lungs, and then there is this lump right next to my main airway. It's against my airway, so they're a bit scared that it'll start causing me breathing problems. अगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है या थोड़ा सा move करता है तो it'll start causing me breathing problems. So right now,
they're making the decision to put in a stent in my airway, so in case anything happens, मेरी breathing को कुछ ना हो. Other than that, they explained that they're gonna start with oral chemo, which is medicines and injections. So the oral chemo that they're gonna start from next week, वो उसका मेरे टाइप ऑफ कैंसर के लिए ज़्यादा सक्सेस रेट है. आई हैव अ हार्मोन सेंसिटिव सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर. अभी क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है एंड दे वांट टू मेक माय क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर एंड लॉन्गर, सो देयर गोना स्टार्ट विद द ओरल कीमो विच इज़ अ टारगेटेड ट्रीटमेंट, जिसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो जो कीमोथेरेपी होती है उसकी तरह के हैं. बट आई एम नॉट गोना लूज माई हेयर. पता नहीं ये अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुनी है या पता नहीं क्या हुआ है कि मैं इतनी परेशान थी अपने बालों के बारे में कि देयर लाइक अभी फ़िलहाल के लिए we're gonna start with medicines. There will be a point where this cancer treatment will stop working. तो उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर सेल्स जो हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो कुछ टाइम बाद फाइट करते हैं आपकी ट्रीटमेंट को. तो जब वो होगा या तो हम तुम्हें दूसरी कीमो पे डाल देंगे या we'll change the combination of medication. तो अब उन्होंने ये ट्राई करना है कि जितना टाइम हो सकता है वो मुझे ट्रीटमेंट पे रख के इसको फाइट करते रहें. वो ये चाहते हैं कि उनका कैंसर पे कंट्रोल हो. अब वो मुझे जब ओरल कीमो पे डालेंगे मेरे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स काउंट लो हो जाएंगे. आई विल बी प्रोन टू इन्फेक्शंस. मुझे इजीली इन्फेक्शन हो जाएंगे. आई विल हैव प्रॉब्लम्स विद माई स्टमक. आई माइट लूज वेट. आई माइट गेट हाई टेम्परेचर. But with chemo, the thing is that every body reacts different to chemo. So we don't really know what's going to happen until it starts. And they said that maybe after a while I adapt to the medication. And people do stay on oral chemo for years as well, 2 years, 3 years, and then they change over to other things. So what the plan is right now is कि मैं oral chemo start करूँगी and उसके पूरे 3 महीने बाद they will see कि उन दवाइयों ने मेरे कैंसर को shrink किया है या stabilize किया है. So as long as ये बढ़ नहीं रहा, shrink हो रहा है या stable रह रहा है, it's fine. That's a good thing. अगर मुझे symptoms नहीं हो रहे, that's a good thing. So fingers crossed. आगे जो होता है अल्लाह मालिक है. We are nervous. सुन के कि incurable है, सुन के कि it's gonna be a lifetime fight. डर लगता है, खौफ आता है. मेरे घर वालों पे एक बहुत बुरा टाइम गुजरा है हम सब के लिए. It's very difficult. लेकिन होप के बगैर, फेथ के बगैर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता. अल्लाह पे हमें यकीन है एंड आई बिलीव अल्लाह मियाँ मेरा ये सफ़र आसान करेंगे और शिफा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी लड़ने की. मैं फिर भी सोचती हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है वो फिर भी बहुत आसान है. लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कि ना इलाज करवा सक रहे हैं, ना उनको पता चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है. जब तक मेरी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट होती आई फील कम्प्लीटली फाइन. लेकिन मैं सोचती हूँ कि दुनिया में there is so much happening in the world. People go through so much. फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ. Whatever is happening to me is way better than what happens everywhere in the world. रोज़ अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ये ज़िंदगी दी है, ये हिम्मत दी है इसे लड़ने की. एंड मुझे उम्मीद है कि मेरी ये स्टोरी शेयर करने से मैं सबको उम्मीद दे रही हूँ. अगर कोई भी ऐसा है जो किसी लड़ाई से लड़ रहा है उसको भी उम्मीद मिलती है कि लड़ना है, जिंदा रहना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए. वी हैव टू फाइट एवरी डे. लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं है. अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो किसी को कोई और है. किसी के लिए छोटी प्रॉब्लम बड़ी है, किसी के लिए बड़ी प्रॉब्लम छोटी है. मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड कि कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा. ये मेरी पहली दफ़ा है ये शेयर करते हुए, ये ऊंचा ऊंचा बोलते हुए, तो शायद मैंने कुछ बातें मिस कर दी हुई.
If you have any questions, I'll be happy to answer and help. Ask me in the comments, whatever it is. I think we all are stronger together. एक मसला है कि लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का अच्छा सोचें, सपोर्ट करें, हम बहुत आगे जा सकते हैं. सो या अल्लाह पे यकीन रखें, मेरे लिए दुआ करें. इंशाल्लाह आई एम गोना बी फाइन, आई एम स्ट्रॉन्ग. या आई होप कि आज की इतनी बातों ने हम सबको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया है. और या every day I'm getting closer to a happier and healthier version of myself. Love you all.